हाँ जैसे आ गया। That's fine, but जो like बहुत ज़्यादा lectures miss करते हैं, they must keep a track of their attendance. चलिए ठीक है, आज वाला lecture start करते हैं. और as usual आज वाला lecture start करने से पहले एक brief overview ले लेते हैं last lecture का, so that if you have any query regarding it तो आपको पूछ सको. Last lecture में हम लोगों ने as we have started network security, तो हम लोगों ने last lecture में बिल्कुल उसका introductory topic that was how like what are the possibilities or who are the individuals against which we are trying to protect our system. Like कौन intruders कौन होते हैं जिनके against हम अपने system या networks को protect करने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो last lecture में हम लोगों ने actually different types of intruders देखे थे, उनके different skill sets देखे थे, and then उनके behaviors देखे थे, because every type of intruder have their own specific set of behavior, generally identified ones. उसके बाद हम लोगों ने intrusion detection systems देखे थे कि IDS systems क्या होते हैं, उसमें generally किस तरह, like there were two types of IDS systems, that was host based network ones and hybrid one. और उसके बाद उसमें भी दो different approaches थी जो कि detection approaches हमने देखी थी. एक थी anomaly detection and second one was signature or heuristics based detection. So अगर आप लोगों की किसी भी स्टूडेंट की regarding previous lecture कोई भी query है कि आपको intruders या उनकी type, उनका behavior समझ नहीं आया, or you didn't get any details about IDS systems or their detection technique, सब बच्चों को clear? Yes ma'am. Okay. Okay, so let's start with today's lecture. अगर सब कुछ previous lecture से clear है, किसी student की कोई query नहीं है, आज वाले lecture में basically हमने intrusion prevention systems देखना था, but उससे पहले there is very important topic that is firewalls, because normally हम लोग firewalls को ही as an intrusion prevention system जो है वो use कर रहे होते हैं. So हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे firewalls, like why do we need them and what are their purposes, and then few different types of firewalls that are being used on different networks. उसके बाद हम देखेंगे कि हम exactly networks जो firewalls है उनको place कहाँ करते हैं. Like when you are going to implement a firewall within any network, तो उसकी placement कहाँ पे होती है, where do you place that specific firewall, और वो depend कर रहा होता है उसकी type of firewall पे. जिस तरह की like firewall होगी उसके according उसकी placement normally होगी. और end पे हम लोग देखेंगे कि intrusion prevention systems क्या होते हैं and why there is some kind of distortion. Okay, end पे हम देखेंगे कि intrusion prevention systems क्या होते हैं, and then we will be discussing about that. So let's just start our lecture with firewalls and basics of intrusion prevention systems. What do you think last lecture में, क्योंकि आप intrusion detection system पढ़ चुके हो, तो आपके ख्याल में intrusion prevention systems क्या होते हैं? जी 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 हमजा हसन जैसे मैम जो इंट्रूजन डिटेक्शन होती है ना, उसमें सिर्फ हम डिटेक्ट करते हैं अटैक को ना पैटर्न्स की बेस पे. तो जो प्रिवेंशन है वो उसको मिटिगेट कैसे किया जाए उस अटैक को, मतलब उसको कौन से ऐसे काउंटर मेजर दिए जाएं कि वो अटैक टोटली प्रिवेंट हो जाए और उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो खत्म हो जाए. डिटेक्शन नॉर्मली क्या होती है, दैट इज द काइंड ऑफ सिस्टम जो कि डिटेक्ट कर रहा होता है if there is any intrusion or some kind of problem is being happening. जो malicious incidents होते हैं हाँ जी, उनको उस टाइम पे डिटेक्ट कर पाता और लेटर ऑन भी समटाइम्स, लाइक वो एक्टिव मैयर मोस्ट ऑफ टाइम नहीं होता. बहुत कम ऐसे होता है कि हम इंट्रूजन डिटेक्शंस को जो है वो एक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. नॉर्मली जो आपके इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स होते हैं, दे आर द वंस दैट आर लाइक वर्किंग एक्टिवली, कि अगर उन्हें कोई पैकेट या कोई भी ऐसा रिक्वेस्ट जो है वो सस्पिशियस लग रहा है तो उसे वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं. इट्स नॉट कि वो उसको पूरा कंप्लीट करते हैं और उसके बाद उसको फ्लैग करते हैं दैट देयर इज सम काइंड ऑफ इंट्रूजन. सो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स आर द वंस कि वो जो उस टाइम पे एक्टिवली एक्ट करके तो इंट्रूजन को प्रिवेंट कर रहे होते हैं. एंड फायरवॉल्स आर द लाइक one of the intrusion prevention, and again they are most sometimes considered as part of intrusion detection systems as well, although they are not IDS completely, like we usually separate them on the basis of two properties. लेकिन
वो लाइक कुछ टाइप्स ऑफ फायरवॉल या उसकी जब उनको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कुछ प्रिंसिपल्स के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है, कुछ पॉलिसीज के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो हम उन्हें intrusion prevention systems में consider करते हैं. Now, why do we need firewalls? Because firewalls are one of the very effective way of protecting our local area networks. Like we don't need any kind of IDSs or any other thing. We can use pre-developed or already pre-existing firewalls. Second, for ensuring the security within any organization or even on a single host, they are very effective and nowadays very essential. Especially जब इंटरनेट पे या किसी भी नेटवर्क पे हम उन्हें कनेक्ट कर रहे होते हैं, not just lanes but even on internet. So organizations on level of their network, like security or on their host levels, they use firewalls. Even we do use firewalls. अभी अगर आप सब बच्चे जो हैं इस टाइम पे Windows operating system use करो तो there is this built-in Windows Defender firewall that's being activated. Or अगर like if you are using MacBooks, then that would definitely be having its own firewall that's there at host level. So firewalls current time they are considered as this essential requirement if your system is going to be connected with internet, क्योंकि वो आपको एक basic kind of security against well defined threats जो कि generally एक common kind of threats होते हैं उनके against protect करी होती है. फिर नॉर्मली जो फायरवॉल्स है वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट की जा रही होती है? फायरवॉल्स जो होती है वो यूजुअली आपकी सिर्फ ट्रैफिक को मॉनिटर कर रही होती है और वो सिंगल चौक पॉइंट होती है. लाइक इट्स नॉट कि वो मल्टीपल लेयर्स में इम्प्लीमेंटेड होती हैं या मल्टीपल स्टेप्स में इम्प्लीमेंटेड होती हैं. आप ये कह सकते हो कि जैसे बिल्डिंग में एंट्रेंस के लिए नॉर्मल इफ योर लाइक ऑर्गेनाइजेशन हैव जस्ट वन एंट्री पॉइंट और आपने उसी एंट्री पॉइंट पर अगर सिक्योरिटी रखी हुई है तो दैट इज वो आपका सिंगल चौक पॉइंट, सिंगल चेकिंग पॉइंट है. तो फायरवॉल्स भी नॉर्मली जो होती है वो सिंगल चौक पॉइंट होती है. लाइक सिंगली दे आर जस्ट वंस बीइंग मॉनिटरिंग एवरीथिंग. इट्स नॉट कि वो डिफरेंट लेवल्स पे जो है काम कर रही हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पे भी आप लाइक फॉर एग्जांपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन आवर फिजिकल एनवायरनमेंट्स गेट पे भी गार्ड्स हैं. देन आगे डिपार्टमेंटल बिल्डिंग्स के आगे भी सेपरेट सिक्योरिटी सिस्टम है. विद इन द department or within the building of each department there is another set of security guards that's working. So इस तरह के कोई check points नहीं होते normally. Firewalls का single जो है वो check point होता है जहाँ से वो traffic को और हर चीज को monitor करी होती है. Firewalls की जो access policy होती है like on the basis of which they are going to make sure कि कौन सी packets या कौन सी traffic जो है वो authorized है, कौन सी जो है वो unauthorized है, या कौन से पैकेट ड्रॉप करने हैं, कौन से जो है वो इस नेटवर्क पर ट्रैवल करने देने हैं अगर इन केस ऑफ LAN और इन केस ऑफ नेट ऑर्गेनाइजेशनल कनेक्टिविटी विद द इंटरनेट. तो वो दैट इज वेरी क्रिटिकल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन कि जब आप किसी भी फायरवॉल की एक्सेस पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो एट दैट मोमेंट यू नीड टू मेक श्योर कि आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटोकॉल्स और जो एप्लीकेशंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रही हैं उन सारी चीजों को कंसीडर करो. लाइक दीज आर द आईपी एड्रेसेस, दिस इज द रेंज दैट वी आर गोइंग टू यूज, ये प्रोटोकॉल्स हमारे नेटवर्क पर ट्रैवल कर रहे होंगे, ये एप्लीकेशंस यूज हो रही होंगी. बिकॉज फायरवॉल्स को अगर आप राइट वे में इम्प्लीमेंट करो देन दे आर द लाइक दे आर गोइंग टू बी द वेरी बेनिफिशियल एलिमेंट ऑफ योर सिक्योरिटी. और अगर उनको राइट वे में आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, लाइक यू पुट सो मच प्रेशर ऑन टू इट, यू पुट wrong kind of policies, आप कुछ application की requirements को miss out कर देते हो, आप कुछ protocol like अपने IP addresses की अगर ranges आपने set की हुई है तो उनको miss out कर देते हो, तो then it would be very hard for any firewall to filter out the elements that it should be. So firewall access policy जो है कौन, पहली बात कि उसमें कौन से different जो principles होंगे, different policies होंगी, वो कौन सी होंगी. Second, who's the one who's going to implement those policies and making sure that the firewall is working properly. These are the few points that are very critical for any firewall. और अगर वो properly implemented होंगे तो ही आपकी जो firewall है वो सही से काम करेगी. Clear? Okay, every firewall, each and every one. We will be studying different types of it. सबकी अपनी different pros होते हैं, cons होते हैं. Like everyone has its own capabilities and limitations, but there are few general ones. Okay, जो हर firewall में होगी, regardless of its type, regardless of its
implementation or point where it's being placed within a network. वो general capabilities या जो उसकी pros हैं वो कौन से हैं, that is first it's a single choke point. Like you don't need to be worrying कि okay मैं यहाँ पे ये वाली specific policies implement कर देता हूँ, next point पे ये कर दूंगा, नहीं, you just need to be considering it one single policy or one single set of details or set of policies that you are going to give into that system. If you are done with that, इसका मतलब है कि आपको सिर्फ एक सिंगल पॉइंट को सिक्योर करना है, उससे रेलेवेंट वेल डिफाइंड पॉलिसीज होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने सिस्टम में किस तरह के पैकेट्स, किस तरह की कनेक्शंस और किस तरह की चीजों को जो है वो परमिट करना है. सेकंड इज कि हमेशा जो है वो आपको लाइक इट प्रोवाइड्स अ सिंगल लोकेशन फॉर मॉनिटरिंग सिक्योरिटी. There isn't a lot of going on. जैसे IDS में mostly हो रहा होता है that you are continuously monitoring your network traffic and all these things. नहीं, those normally सिर्फ अगर network levels पे firewalls जब implement होती है तो single एक point पे like they are being placed there और वो सिर्फ अपने network के internal like उस time पे जो traffic आ रही होती है network में और जो network से बाहर जा रही होती है, that's just the one single point जहाँ से वो continuously monitor कर रही होती है. So like it's a debatable thing, but most of people think that this is actually agar aap security expert nahi and you don't know much about the policy implementations and you don't know about much about attacks and all these things on information, so in that case firewalls are your good friends क्योंकि आपको ज़्यादा policies और ये चीज़ें modify करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक single level पे जो है वो monitoring system add करना है, तो ये ज़्यादा secure as compared to IDS जब like again that's debatable in case you are not that much of an expert person. आप अगर आप expert हो तो definitely आप IDS को भी बहुत अच्छे से यूज कर लोगे, लेकिन जैसे आपको पता है कि विंडोज में firewalls इसीलिए आता है ना कि if anybody who doesn't have any idea how to protect himself or his systems, तो at least एक basic security parameter और set of policies जो है वो वहाँ पे हो इसके system को protect करने. So this is one of the pros of firewalls. Second, जो firewalls होती हैं normally they are very convenient, like they are easily available, you can easily implement them, there isn't a lot needed to be done. आप उनके लिए like most of time आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके उन्हें कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता. अगेन वही बात कि if you are not an expert, you are a night user or you are an initial or intermediate level of security personal जिसने एक environment में security implement करनी है, तो firewalls are your good friend for that. At the same time, there are few limitations for firewalls as well. That is कि वो again single choke point है और वो like they come up with one single monitoring security system और वो policies पे काम कर रही होती है. और अगर आपने वो policies ठीक से implement नहीं की, you might be using default policies or something like that. तो firewalls जो है वो हर तरह का attack जो है वो उसको control करने के लिए उसको उसके against आपकी organization को defend नहीं कर सकते. You can say that they are not well equipped to stop or to identify each and every attack onto your system. Especially अगर आपका कोई like आपने एक network पे firewall implement की है और network से बाहर कोई laptop कोई system जो है वो infect होके like normally वो उस environment में आ जाता है, उस lane से आके connect हो जाता है, तो most of time क्या होता है कि firewalls उसके like internally जितनी भी आपकी वो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, अटैक्स अगर हो रहे होते हैं ना, उनके अगेंस्ट दे आर नॉट सक्सेसफुल. और हमने देखा था कि IDS इवन डज दैट, या IDS जो वो इंटरनल या इनसाइडर्स जो हैं उनके अगेंस्ट जो उनसे अटैक्स होते थे उनसे भी प्रोटेक्ट कर रहा होता था. सो दिस इज लिटिल बिट लाइक अ लिमिटेशन कि वो आपको इनसाइडर अटैक्स जो हैं उसमें दे कांट हेल्प यू ऑन टू दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी लाइक ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जहाँ पे भी लाइन में आपने प्रॉपरली अगर फायरवॉल इम्प्लीमेंट नहीं की हुई तो आप एक तो इंटरनल जो आपके थ्रेड्स हैं उनसे भी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. सेकंड, अगर आपका वायरलेस लेन है तो भी आपकी फायरवॉल जो है वो हेल्पफुल नहीं होती क्योंकि देयर इज दिस थिंग कि जो फायरवॉल्स होती हैं वो वायरलेस सिस्टम्स या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, वो उनके लिए इतनी वेल डिजाइन. So there are these few limitations for each and every type of firewalls. It's not कि वो सिर्फ जो packet filtering firewalls हैं उनके लिए application.
लेवल फायरवॉल्स के लिए नहीं है, ये सारी फायरवॉल्स की लिमिटेशंस है that they usually don't work in wireless lanes. Always remember that. This is very important point. At the same time, it might be there in your MCQs or true false because there is this large question bank. तो हमेशा आपको छोटे-छोटे points को भी जो है वो याद रखना करें. Okay, moving forward, each and every firewall have its own filtering characteristics. It's not कि हर firewall जो है वो like इन चारों filtering जो आपकी characteristics हैं इन पे काम कर रही होगी, नहीं. नॉर्मली क्या होता है, एक कोई कुछ फायरवॉल्स होती हैं जो आपके आईपी एड्रेसेस और प्रोटोकॉल्स की बेसिस पे के ओके हर पैकेट का जो इनिशियल हेडर है वो इस तरह का डिजाइन होना चाहिए. अगर आप IPv6 और IPv4 यूज कर रहे हो तो लाइक अकॉर्डिंग. कुछ फायरवॉल्स जो होती हैं वो क्या कर रही होती है, पैकेट फिल्टरिंग या मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रैफिक कर रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर आईपी एड्रेसेस एंड प्रोटोकॉल वैल्यूज बाय मॉनिटरिंग डिफरेंट हेडर्स एंड ऑल दीस. कुछ होती है वो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स पे काम कर रही होती है. व्हाट डज दैट मीन कि वो एप्लीकेशन का जो कम्युनिकेशन होता है ना विद द आउटर वर्ल्ड, स्पेसिफिक एप्लीकेशन का, उसको मॉनिटर कर रही होती है कि दिस एप्लीकेशन शुड बी डूइंग दीस पॉसिबल सेट ऑफ एक्ट्स विद आउटर वर्ल्ड और ऑन इंटरनेट. इफ इट्स वर्किंग दैट देन इट्स फाइन, अदरवाइज ये एप्लीकेशन जो है वो कोई रॉन्ग काइंड ऑफ पैकेट सेंड कर रही है. मतलब वो एप्लीकेशन की जो possible exchange of information with other applications सिर्फ वो उसको ही कंसीडर कर रहे होते हैं. So हर फायरवॉल जो होती है वो नॉर्मली इनमें से किसी एक कैरेक्टरिस्टिक पर बिल्ड होती है. या तो वो आईपी फिल्टरिंग की बेसिस पे होती है, आईपीएफ प्रोटोकॉल जो आपकी फिल्टरिंग होती है, या फिर वो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल की बेस पे होती है. Then there are few firewalls that are working on the basis of user identity. कि आप उन्हें filter out like आप उन्हें policies दे देते हो कि ये users की डिटेल है, like this is the details about internal users and they are the only ones who should be able to interact with the outer world. In that case वो क्या कर रहे होते हैं, वो सिर्फ आपकी authentication और इन चीज़ों के लिए यूज होती है. So authentication के लिए अगर आप कोई firewall यूज कर रहे हो, that would be your user identity firewall. Then there are network activity firewalls. They are usually the ones जो कि हम larger organization में जब lanes होते हैं उन पे implement कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो कि आप like you can't identify each and every user क्योंकि maybe जैसे larger universities होगी या जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा like daily basis पे users जो हैं वो most of time they are being changed or being updated every semester. तो उसमें आप क्या करते हो कि आप network activity की base पे कर देते हो. Like if you think that this specific request is genuine और ये resource available है और इस request में कोई problem नहीं है, तो in that case you consider that. या फिर आप देखते हो कि it's the right time for that request and these requests are not being generated a lot, like DDoS attacks and DOS attacks के against भी अगर आपने protect करना है, so then this firewall would be there. So ये different characteristics हैं और हर firewall जो भी अब इससे onwards हम लोग different types discuss कर रहे होंगे वो that's been working on any one of them. बहुत rare ऐसा होता है कि आपकी कोई भी firewall जो है वो more than one characteristics पे काम कर रही हो. अगर if you wanted to achieve multiple characteristics, for example you wanted to achieve user identity and application protocol at the same time, then what would you be doing? आप दो firewalls जो है वो अपने network पर implement करोगे at different levels. Okay, this is where I'm going to implement this specific, for example, packet filtering firewall for IP and all these things, and this is where I'm going to, sorry, IP के लिए जो है वो stateful inspection होती है. खैर, like आप accordingly जो है वो चीजों को manage करोगे. Now, what are different types of firewalls? Firewalls की multiple types होती हैं और वो multiple या ये कह सकते हो कि different layers पे काम कर रही होती हैं accordingly. जैसे कि जो आपकी like पहली और most commonly used firewall है, that is packet filtering firewall, like the one that's being used a lot on networks. Or the one that's being used a lot by the organizations for their local area networks. उसे कहते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल. पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के बारे में खैर अभी हम डिटेल में भी थोड़ा सा देखेंगे. It's a kind of firewall that works on just on the basis of packet filtering. Like वो हर पैकेट को आइडेंटिफाई कर रही होती है. If that it finds out that packet उसके हेडर की बेसिस पे कि it's working fine or not, तो वो क्या करती है उसको परमिट कर देती है क्योंकि पास ऑन कर जो नेटवर्क पे चले जाओ. या क्योंकि नॉर्मली फायरवॉल्स होती हैं वो इस लेवल पे इम्प्लीमेंटेड होती है ना, लाइक आपका एक्सटर्नल नेटवर्क होता है जैसे कि इंटरनेट हो सकता है, देन आपका इंटरनल और ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क होता है जिसपे आपने लाइक चेक्स और सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट की होती है. तो अगर यहाँ पे आपकी पैकेट फिल्टरिंग
जो फायरवॉल है वो इम्प्लीमेंटेड है, तो इन दैट केस व्हाट वुड बी हैपनिंग कि वो हर पैकेट को मॉनिटर करी होगी ऑन द बेसिस ऑफ सम गिवन पॉलिसीज एंड मेकिंग श्योर कि वो आपने जो भी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की हुई है उनकी बेसिस पे वो हर पैकेट को फिल्टर करेगी, और अगर कोई पैकेट उसको उस पॉलिसीज पर पूरा उतरता नहीं नजर आ रहा होगा, मे बी जो आपके आईपी रेंजेस आपने उसे प्रोवाइड की हुई है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आईपी रेंजेस हैं, इस पे फॉल करना चाहिए, अगर कोई एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट की हुई है, लाइक जो भी आपने वहाँ पे उसको बेसिक पॉलिसीज दी हुई है उनमें से जो हर ईच एंड एवरी पैकेट को मॉनिटर करती है, और अगर कोई भी पैकेट उसको उसके अगेंस्ट लग रहा होता है तो यूजुअली वो ड्रॉप कर देती है। यूजुअली इट्स बीइंग ड्रॉप, बट अगेन वहाँ पे 2 डिफॉल्ट पॉलिसीज होती हैं। अभी जब हम पैकेट फिल्टरिंग को डिटेल में देखते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि डिफॉल्ट 2 पॉलिसीज होती हैं। हर एडमिनिस्ट्रेटर पे, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पे डिपेंड करता है कि वो बाय डिफॉल्ट कौन सी पॉलिसी पिक करता है। Okay, moving forward, next type जो होती है that is stateful inspection. Firewall stateful मैम inspection. है जी हसन। मैम, ये जो पैकेट फिल्टरिंग है, ये जो ये हमारे आईपी एड्रेस के अराउंड वर्क करती है ना? ये नॉर्मली डिपेंड नहीं बेटा, ये हर पैकेट को फिल्टर करी होती है, आपकी पॉलिसीज पर डिपेंड करता है कि आपने पॉलिसीज में क्या जो है वो ऐड किया हुआ है कि ये पैकेट जो है उसमें ये डिटेल्स होनी चाहिए। जो प्योरली आईपी पे काम करी होती है या आपके जो लाइक नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स की जो बेसिस पे काम करी होती है, दैट इज जो स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। लाइक ये नॉर्मली आपके हर पैकेट के हेडर को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोकॉल देख रही होती है कि अगर यहाँ पे IPv6 इम्प्लीमेंटेड है तो हेडर का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, हेडर में ये बिट्स होनी चाहिए, ये मिसिंग है इसका मतलब है ये पैकेट मुझे ड्रॉप करता है, तो वो नॉर्मली स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल करी होती है। पैकेट फिल्टरिंग इज वर्किंग ऑन जनरल रूल्स, जो उसने आपने हर पैकेट के लिए उसको बताए होते हैं वो उस पर काम करी होती है, उसके अगेंस्ट वो नहीं जाती, स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता। हाँ, अगर प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस की बेसिस पे करना तो दैट इज स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, दैट प्योरली वर्क्स ऑन योर नेटवर्क कनेक्शन स्टेट, और यू कैन से कि प्रोटोकॉल जो भी आप वहाँ पे यूज करो, और वो हर पैकेट का हेडर जो है वो अकॉर्डिंगली मॉनिटर करती है और बताती है कि इफ देयर आर एनीथिंग मिसिंग इन दैट हेडर IPv6 के अकॉर्डिंग नहीं है, जो भी आपने प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो इन पैकेट को ड्रॉप कर देती है। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल. As the name says, it's a kind of firewall which secures your applications. Yeah, ये कह सकते हो कि it's a kind of a firewall that helps you in making sure कि आप जो भी organization में applications use कर रहे हो, they are going to interact with the outer world securely. तो ये normally क्या करती है कि हर application, each application that's going to be work on that in that environment, जैसे कि आपके HTTP हो गए, like इस तरह के protocols हो गए, उनके दरमियान में जो एक सिक्योर कनेक्शन होता है या उसके दरमियान की जो पैकेट फिल्टरिंग होती है नॉर्मली, दैट्स बीइंग डन बाय दिस स्पेसिफिक फायरवॉल। दो एप्लीकेशंस के दरमियान में कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए फायरवॉल्स यूज होती है, और दो एप्लीकेशन के दरमियान में जो है वो मेक श्योर करने के लिए कि जो भी पैकेट्स जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर सिक्योर एंड दे आर अकॉर्डिंग टू द अगेन रूल्स एंड पॉलिसीज दैट्स बीइंग गिवन, तो वो उसको जो है वो देख लेते हैं। सो नॉर्मली जो आपके एप्लीकेशन लेयर पे अगर कोई फायरवॉल या कोई सिक्योरिटी लेयर इम्प्लीमेंटेड है तो दैट्स एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल। इसके एंड पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली हम किन एनवायरनमेंट्स में चारों को यूज कर रहे होते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग एज सून एज वी विल बी स्टडीइंग देम इंडिविजुअली। ओके, लास्ट वन इज सर्किट लेवल और यू कैन से कि transport level proxy firewall. This is a kind of firewall that actually works when we have this environment जहाँ पे हम लोगों ने दो secure connections build करना होता है between any two users or any two, you know, maybe most of time applications even, मतलब ऐसा कोई सर्किट लेवल firewall इस तरह काम करी होती है कि जो आपका इंटरनल जितने भी यूजर्स होते हैं ना, दे आर बीइंग एक्टेड एज वन और कंसीडर्ड एज वन बिकॉज दे आर ऑल ट्रस्टेड यूजर्स, और आप उनको एक्सटर्नल वर्ल्ड के सामने जो है वो एक्सपोज नहीं करना चाह रहे कि व्हाट डिफरेंट सेट ऑफ और नंबर ऑफ यूजर्स डू वी हैव। तो जो सर्किट लेवल प्रॉक्सी फायरवॉल है, व्हाट इट डज कि अगर यहाँ से कोई पैकेट बाहर जाना है तो इट वुड बी establishing one secure connection with the user by itself, और external world के साथ ये normally say you can say कि जब भी external नेटवर्क से कोई भी
पैकेट आता है तो वो उसको इस फायरवॉल को पैकेट आता है, इट्स बीइंग एड्रेस्ड, और ये फायरवॉल नेक्स्ट फिर रिस्पॉन्स करती है जिस भी यूजर ने इसकी रिक्वेस्ट की हो. सो नॉर्मली इट्स बीइंग एक्टिंग एज अ सिक्योरिटी लेयर, और यू कैन से अ सर्किट लेवल सिक्योरिटी, जिसमें आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड को बिल्कुल पता नहीं होता कि वो इंटरनली किस यूजर के साथ एग्जैक्टली इंटरेक्ट कर रही है. सो अगर आपकी ऐसी फायरवॉल्स इंप्लीमेंटेड है तो दैट इज योर सर्किट लेवल प्रॉक्सी फायरवॉल्स. So let's look each and every one of them so that we can get a more clear idea about all of them. So पहली जो थी वो थी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, राइट? और पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के बारे में मैंने आपको बताया था दैट इट्स अ काइंड ऑफ फायरवॉल दैट इज वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ रूल्स होते हैं जिनकी बेसिस पे आपने अपने पैकेट्स को जो वो चेक करना होता है, मॉनिटर करना होता है, और अगर वो जो है वो उस स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल पे इम्प्लीमेंट तो पूरा नहीं उतर रहा हो, देन यू हैव टू डिसाइड कि आप उसको फॉरवर्ड करना है या डिस्कार्ड करना है. एक्चुअली आपके पास दो पॉसिबल बाय डिफॉल्ट सिर्फ रूल्स आते हैं. इनफैक्ट इसकी रूल बुक से ही डिस्कशन करते हैं ओवर हियर. रूल टेबल इस तरह का कुछ बना होता है आपके पास, दैट्स अप टू यू कि आपने किस तरह फॉर्मुलेट करना है, बट जनरली बाय डिफॉल्ट देयर आर टू रूल्स, दैट इज कि आपने अगर जितने भी आपने जो है वो रूल्स दिए हुए हैं पैकेट अलाउ करने के लिए और पैकेट को जो है फॉरवर्ड करने के लिए, इनमें से आपका पैकेट किसी भी रूल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा या पूरा नहीं उतरा, तो बाय द एंड ऑफ दैट ब्लॉक आपने एक डिफॉल्ट रूल दिया होता है. डिफॉल्ट रूल या तो होता है कि फॉरवर्ड कर दो या होता है डिस्कार्ड कर, लाइक दैट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट. अगर आपकी एनवायरनमेंट ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा हाईली सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं है तो उसमें हम जनरली क्या करते हैं, वी जस्ट अलाउ. या फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा टन ऑफ यूजर्स यूज कर रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट के अगेन मैं एग्जांपल दूंगी कि यूनिवर्सिटीज में नॉर्मली जो बाय डिफॉल्ट पैकेट फिल्टरिंग रूल होता है दैट इज अलाउ, जो कि लेटर ऑन चेंज किया जा सकता है. रीजन यही होती है कि अगर आप यहाँ पे डिस्कार्ड वाला डिफॉल्ट रूल लगा दो कि ओके दीज आर द सेट ऑफ रूल्स, जनरल रूल्स, पहले आप क्या करते हो टेबल में अपनी पॉलिसीज ऐड करते हो सारी कि पैकेट जो है उसमें ये चीज होनी चाहिए, सोर्स का एड्रेस इस तरह फॉर्मुलेट होना चाहिए, पोर्ट नंबर हमेशा ये होनी चाहिए, इफ यू वांटेड टू गिव स्पेसिफिक वन. अगर आप उसको लाइक स्टैटिक करते हो दैट मींस अलाउ एवरीथिंग दैट्स बीइंग देयर. और अगर ये सारी पॉलिसीज लाइक दिस इज सिंगल पॉलिसी जो एक पूरी रो में होती है, अगर आपके टेबल में 10 पॉलिसीज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसीज गिवन है, लेकिन अगर आपके उस टेबल में 10 पॉलिसीज हैं या 10 रूल्स हैं और आपका पैकेट उन 10 रूल्स में से किसी पे भी पूरा नहीं होता था, लाइक इट्स नॉट बीइंग पार्ट ऑफ योर फर्स्ट पॉलिसी और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इवन 10, तो 11th पे हमेशा आपका नॉर्मली डिफॉल्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेड होगा. डिफॉल्ट लाइक ब्लॉक और फॉरवर्ड दो ही नॉर्मली जो है वो आपके डिफॉल्ट रूल्स होते हैं. जनरली जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी बहुत क्रिटिकल होती है एंड यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन लॉट ऑफ अदर फायरवॉल्स, तो आप क्या करते हो, आप उसमें ब्लॉक का जो जनरल पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो, या रूल जो है बाय डिफॉल्ट उसको, और कुछ होता है जहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट अलाउ कर देते हो. सो दीज आर द टू वंस जो कि बाय डिफॉल्ट आ रहे होते हैं, लेकिन एट अ टाइम में एक इम्प्लीमेंटेड होता है, मतलब आप एक ही को एक्टिव कर सकते हो एट अ टाइम. क्लियर अबाउट पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स? Yes, ma'am. Okay. Okay, Yes, ma'am. fine. You have to always remember कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स जो है वो the most used ones are and they are the ones that are easy to implement, as we have just seen कि हमें उनमें कुछ रूल सेट करने पड़ते हैं और उन रूल्स की बेसिस पे हमारे जो पैकेट फिल्टरिंग firewall है that works कि okay these are the kind of packets that I'm going to allow into the network and these are the ones that I'm going to block. और अगर इनमें से किसी रूल पे नहीं पूरा होता रहा तो देन मैं डिफॉल्ट के पास जाऊंगा और डिफॉल्ट डिसाइड करेगा कि मैंने पैकेट को ड्रॉप करना है या पैकेट को फॉरवर्ड करना है इस नेटवर्क पे ट्रैवल करने देना. सो दिस इज पैकेट फिल्टरिंग. दिस इज यूजुअली लाइक सेट ऑफ पूरा, अगर आपने कभी देखना है तो इस तरह के पूरे टेबल्स होते हैं जिनमें रूल्स डिफाइंड होते हैं. वीकनेसेस खैर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हर तरह के अटैक के अगेंस्ट प्रिवेंट नहीं कर सकता बिकॉज यूजुअली दे आर वेरी यू नो लिमिटेड. उनमें रूल्स गिवन होते हैं, आप हर अगर लाइक इवन दो यू ट्राई बट स्टिल यू कांट राइट रूल्स अबाउट ईच एंड एवरी काइंड ऑफ अटैक्स. बट ये हो सकता है कि आप जो आपके जनरल अटैक्स हैं लाइक आईपी एड्रेस स्पूफिंग, सोर्स रूट अटैक्स और इस तरह के, उनके अगेंस्ट जो है वो अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. और लेकिन ये तीनों अटैक्स भी अब तभी प्रॉपर्ली
जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है अगर आपने अपने गिवन जो आपकी like rule set of rules है उनको properly configure किया हो. If you haven't done that, then still you can't do that. इसका मतलब है कि you do need a lot of, not even a lot of, but at least a basic knowledge about devising the set of rules जो कि जिनकी basis पे आपकी packet filtering होती है. क्योंकि अगर आप properly नहीं करोगे तो फिर आप ये जो 3 basic attacks हैं जिनके against अपने system को protect करने की कोशिश करोगे system और network through packet filtering firewalls को भी नहीं कर पाओगे. So that was it about packet filtering firewall. I'm just expecting कि आपको ये समझ आ गया होगा. हम next type of जो firewall discuss करते हैं, which is stateful inspection firewall. Stateful inspection firewall is a little bit advanced than packet filtering. कि ये जो है वो सिर्फ ये नहीं एक set of rules, general set of rules जो है वो आपको given है और आपने सिर्फ उसी की basis पे system को जो है वो या packet को जो है वो monitor करना है. Normally जो stateful firewalls होती हैं, they are monitoring all aspects of traffic stream. Like they are ensuring कि आपके जो IP addresses हैं, they are working fine. Port numbers जो है वो उनको check करी होती है कि port numbers जो है वो within the given limitation and they are not exceeding that. Like it's working on a lot of different parameters and making sure कि आपका हर जो packet parameter and it's being filtered. It's not just कि कुछ specific set of rules है, नहीं बहुत एक large आपके पास security principles होते हैं जिन पे ये काम करी होती है. Stateful की जो firewalls होती हैं, they are the usually ones जो कि हम लोग TCP connections को secure करने के लिए या TCP traffic को overall secure करने के लिए use कर रहे होते हैं. Like we are making sure कि हमारा कोई भी ऐसा packet जो है that's not being like there isn't any default scenario क्योंकि ठीक है अगर इनमें से किसी पे नहीं पूरा उतरा या तो इसको discard कर दो या normally इसको let it allow a permit तो इस तरह का इसमें कुछ नहीं होता. It usually discards the packet as soon as it finds out कि इसमें कोई problem है या उसका जो आपका header है वो properly किसी specific IPv protocol पे पूरा नहीं उतरा. Like यहाँ पे कोई default permit वाली permission नहीं होती कि गलती से भी कोई पर्सन या कोई जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसको गलत कॉन्फ़िगर ना कर ले. So these are little bit or not even little bit like a lot more filtration processes going on in stateful inspection firewalls. These are the details like don't give even static or something like that. आप proper details provide कर रहे होते हो हर पैकेट के बारे में कि जो पैकेट जो है उसका source address ये होना like this should be the source address, then source port, destination port, everything should be there. If there is anything that's being missing, तो आप उसको discard करना है. You don't need to go into the details कि उसको allow करना है. Clear? So ये session end होने वाला है. हम next session में ही जो है वो मैं आपकी queries लूँगी regarding stateful firewall, packet firewall और फिर हम लोग next जो है वो application और सेकेंड फायरवॉल भी डिस्कस करेंगे. ठीक है ठीक है मैम. अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी Okay, पूछ ma'am.